Hello everyone, Ashutosh here. How do you do guys? I hope you're doing well. So today in this video, we are going to talk about the trick to remember all the essential amino acids in just one shot. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हिट कीजिए नोटिफिकेशन बेल ताकि आप ऐसी कोई भी अपडेट्स मिस ना कर सकें। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा क्योंकि आखिरी में वहाँ एक मैं बोनस फैक्ट देने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। So, without wasting any further time, let's begin. तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टू से असेंशियल अमीनो एसिड्स का एक ट्रिक देखने वाले हैं कि कैसे उसको याद रखा जाए, और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि असेंशियल अमीनो एसिड्स होते क्या हैं और हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं वो टोटल कितने होते हैं और कितने नंबर हमारे असेंशियल अमीनो एसिड्स के हैं। तो असेंशियल अमीनो एसिड्स की शुरुआत करने से पहले हम देख लेते हैं कि अमीनो एसिड्स होते क्या हैं। Amino acids are basically the building blocks of proteins and essential amino acids देखने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारे अमीनो एसिड्स की लिस्ट क्या है और वो कितने होते हैं। तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो टोटल होते हैं 20। सो वी हैव इन टोटल 20 अमीनो एसिड्स, और उन 20 अमीनो एसिड्स में से मैंने जो है वो पिंक से हाईलाइट कर रखा है कि हमारे असेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं। सो इन टोटल वी हैव 8 अमीनो एसिड्स इन दिस लिस्ट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स। तो 8 हमारे जो असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और रेस्ट आर नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो आप लिस्ट में सारा देख सकते हैं कि जो मैंने हाईलाइट किया है वो हमारे असेंशियल अमीनो एसिड्स बन जाते हैं एंड रेस्ट आर नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल। तो अब हम आ जाते हैं इधर कि हमारे असेंशियल अमीनो एसिड्स होते क्या है। सो असेंशियल अमीनो एसिड्स बेसिकली आर the amino acids which are not synthesized by the body and must be taken in the diet. तो हमको essential amino acids means essential which are required by the body from outside, मतलब हमको डाइट से उसका रिक्वायरमेंट होता है, हमारी बॉडी उसको बना नहीं पाती है। हमारी बॉडी एक्चुअली क्या है कि असेंशियल अमीनो एसिड्स का जो कार्बन स्केलेटन होता है उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमको इसको डाइट के थ्रू बाहर से लेना पड़ता है। तो ऐसे 8 असेंशियल अमीनो एसिड्स है जिनको हमको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, जो कि हमारी बॉडी नहीं बनाती है। उसी को बोलते हैं हम लोग असेंशियल अमीनो एसिड्स। वाइल द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का जो कार्बन स्केलेटन है वो हमारी बॉडी बना सकती है, इसलिए हमको उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हमारे जो असेंशियल अमीनो एसिड्स है उनकी लिस्ट क्या है और उनको कैसे याद रखा जाए वो अब हम देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये निमोनिक है फॉर रिमेंबरिंग द एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो हमारे जो 8 असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, पहले तो हम उनके नाम देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि उनके निमोनिक्स क्या हैं, यानी कि ट्रिक टू रिमेंबर इट। सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट आर द असेंशियल अमीनो एसिड्स। सो दे आर फिनाइल एलेनाइन, M फॉर मिथियोनाइन, T फॉर थ्रियोनाइन, V फॉर वेलाइन, L फॉर लाइसिन, T फॉर ट्रिप्टोफेन, L फॉर ल्यूसाइन एंड I फॉर आइसोल्यूसाइन। तो ये जो हैं ये सारे हमारे असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। So they are in total 8 in number. So we can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So these are the 8 essential amino acids which are required by the body. अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? What is the mnemonic for remembering it? So the mnemonic is actually pre-medical test वापिस late ली, यानी कि P for phenylalanine pre, M for medical यानी कि methionine medical, और T फॉर टेस्ट यानी कि थ्रियोनाइन, V फॉर वापस यानी कि वेलाइन, लेट का L एंड T जो है हमने उसको रिप्रेजेंट किया है L फॉर लाइसिन एंड T फॉर हियर ट्रिप्टोफेन। सो लेट। और अगला जो है ली मतलब L, ल्यूसाइन का L, और I का ली का I जो है वो I से ल्यूसाइन है, राइट। सो वी हैव दिस PMT वापस लेट ली, जो प्री मेडिकल टेस्ट होता है PMT, उसको डिले कर दिया गया एग्जामिनेशन को, तो हमने उस ट्रिक से याद रख लिया कि प्री मेडिकल टेस्ट वापस लेट ली। सो दिस इज बेसिकली द निमोनिक फॉर रिमेंबरिंग द एसेंशियल अमीनो एसिड्स। सो फिनाइल एलेनाइन फॉर प्री, मिथियोनाइन फॉर मेडिकल, थ्रियोनाइन फॉर टेस्ट, वेलाइन फॉर वापस, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन फॉर लेट एंड ल्यूसाइन एंड आइसोल्यूसाइन फॉर ली। सो प्री मेडिकल टेस्ट वापस लेट ली। This is basically the mnemonic which I used to remember the essential amino acids. So this is how you can remember the essential amino acids very easily. I hope you're cleared with this mnemonic. Next very important thing which
I am about to mention here that these two amino acids, which is arginine and histidine, are the semi-essential and, or we can say, partially essential amino acids and not the essential amino acids. This is very important to remember, that arginine and histidine are not the essential amino acids, but they are semi-essential or partially essential amino acids. So what is this basically semi-essential amino acids? Semi-essential amino acids are those amino acids which are required by the growing age of children, and are not required by the adults. So actually adults are not requiring this amino acids, which is arginine and histidine. Only the growing children are requiring this arginine and histidine. That is why we call it as semi-essential, because it is required by a particular age group and not by the other. So we say that arginine and histidine are the semi-essential, or we can say partially essential amino acids. So these two amino acids should not be mistaken for the essential amino acids, while the true essential amino acids are these 8. And these two are semi-essential, not essential amino acids. This is very important to remember. Rest all the amino acids are the non-essential one, which are not required by the body, and the body can produce its carbon skeleton own self. So we will discuss in another video that what are the non-essential amino acids and what are their list. So short you can I hope so you are clear with these essential amino acids, and as I have promised you that we will have a bonus fact at the end of this video. So let's move on to the bonus fact. So this is basically the bonus fact which you can see here. There are 2 more amino acids other than the list we have seen at the very starting of the video, that we have the list of 20 amino acids altogether. But recently, in the 21st century itself, or we can say very recent, these 2 of the amino acids are being added in the list. But we have to remember only those 20 for our study purpose. So this bonus fact is only for the knowledge purpose. So you can see here that we have 2 extra amino acids which is recently discovered. The first one is the selenocysteine. So selenocysteine is abbreviated as SECYS, or we can say SEC. So this is the abbreviation for the selenocysteine. So selenocysteine is basically considered as or tagged as the 21st amino acid in the list, and it is actually having the group SEH, which is the selenium group, instead of the group SH, which is sulfhydryl group, which is present in the cysteine. As we have seen that cysteine is also an amino acid, and it is having the group SH in it, while the selenocysteine, which is the 21st amino acid, is having the group SEH, which is the selenium. So this makes it different from the cysteine, which we have seen earlier in the list of non-essential amino acids. Next is, it is also present in some enzymes. So in some enzymes also its traces are being found. So this selenocysteine are also present there. So I hope this selenocysteine is clear to you. Next we will move on to the 22nd amino acid which is discovered, which is known as pyrrolysine. Pyrrolysine is basically abbreviated as PYL. So PYL is the abbreviation for the pyrrolysine. Pyrrolysine is considered as the 22nd amino acid after the selenocysteine. So it is basically present in the methyl transferase enzyme of certain bacteria. So we have, I think so, heard about this methyl transferase enzyme in the bacteria. So in certain bacteria, this methyl transferase enzyme, this pyrrolysine is being present in that. So in that enzyme, we can have traces of pyrrolysine as well, which is the 22nd amino acid discovered recently. So I hope you enjoyed the bonus fact after this video. So this is all about the bonus fact about the 2 amino acids which are discovered recently and added in the list. But for the exam purpose, you have to remember only those 20 amino acid list which I have showed you in the very first of the video or very starting of the video. I hope आपको सारे essential amino acids याद हो गए होंगे, and if you like my video, then please give it a big thumbs up and share as much as you can. If you haven't subscribed my channel yet, then you're missing out. Please don't forget to follow me on various social media handles.
ओके देन गाइस, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए इस चैनल पे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। सो until next time, Ashutosh here, signing off.